Do not expect too much. Just like any other university, GIKI has its own flaws. जहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ इंस्ट्रक्टर्स अच्छे नहीं होते, इंस्ट्रक्टर्स अच्छे होते हैं तो एक्सपोजर नहीं होता, एक्सपोजर अच्छा होता है तो कैंपस लाइफ नहीं होती. So when you come to GIK, please make sure that you do not expect too much. Because when you come here और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ी सी चीज़ें भी नहीं उतरती, it makes a mess in your life. So, moral of the story, do not expect too much. Though GIK is an expensive university, लेकिन you can still afford it. GIK offers merit scholarships, KPK scholarships, provincial scholarships, and other scholarships as well. You can have all the details available on their website, and it's not a very rigorous process. It is an easy process, and if you deserve it, you will get it. The thing is that यहाँ पे हमें unconventional degree programs भी offer हो रहे हैं, like data science and artificial intelligence. So why not take something different out of GIK? I would not prefer you to come here for mechanical, civil or electrical. Why? Because और सी बहुत ऐसी universities हैं जो ये degrees offer कर रही हैं in a very reasonable price and a good package. So why go for these when you can opt for AI, DS, materials and CE? ज़्यादातर सुनने में ये आता है कि GIKI के ग्रेजुएट्स हार्वर्ड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं एंड व्हाट नॉट, बट दैट्स नॉट ट्रू. अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक 1600 का बैच है, 1500 का बैच है और वो सारे उठ के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं? दैट्स नॉट पॉसिबल. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन एफर्ट एंड आप क्या करना चाहते हैं, हाउ यू टेक थिंग्स, हाउ यू टेक योर कोर्सेज एंड अदर फॉरेन एप्लीकेशंस एज वेल. सो माइंड दैट. GIKI आने से ये इंश्योर नहीं होता कि आपका एडमिशन किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में हो जाएगा. अगेन, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच. कमिंग फ्रॉम लाहौर, माई बिगेस्ट कंसर्न वॉज कि मैं KPK जा रही हूँ तो मुझे माहौल ठीक मिलेगा, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होंगी, बिकॉज KPK के साथ कुछ कल्चरल वैल्यूज़ एसोसिएटेड हैं. बट यहाँ पे आके इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड इनसाइड. Gate से बाहर we have a very different world of KPK and we have their cultural values intact. But when you come inside GIK, there is a whole lot of diversity and acceptance towards anyone, anything and any other culture. GIKI का माहौल बहुत chill है, which means that there is nobody to pressurize you into studies and stuff. So if you are somebody who has zero self-control or minimum self-control, then I don't think GIKI is the place for you. Because GIKI में ना आपको parents का pressure है, ना आपको कोई professor pressure करेगा, and studies का pressure भी उतना ही होगा जितना आप लेंगे. So do consider this point when you come to GIK. This was all from my side.